Namaskar all the student. Myself Umesh Kaur Shekhawat, and now I will teaching you the next topic in the solid state. But before starting new topic, we will discuss about the previous topic, that is the introduction of solid, in which the what is the solid. Already we discussed there that what is the solid. Solid is the state of matter in which the constituent particles are closely packed by the intermolecular attraction force. Okay, and the properties of the solid, that what is the properties of solids? They have the definite shape and definite volume. Second is that high density, they have the high melting point, and they are the low compressible, or can say that the incompressible. These properties already discussed in the previous chapter. And the two main points there was there, that thermal energy and the intermolecular attraction force, which is the responsible for the solid state, that the solid is exist as a solid. Now I will teach you a new topic, or can say that the next topic, that is the types of solid, in which the type of solid, the classified all solids which are present in our environment, that is the divided into two categories. That two categories are, first is crystalline category, that is divided into two categories. First is crystalline and second is amorphous. Crystal, it means that the regular arrangement, and the amorphous is a Greek word which means that the no form. It means that structure is irregular. Now these are the 7 points. On the behalf of 7 points, the all solids which are present in our environment, they are divided or categorized into two categories, crystalline or amorphous. Now we will discuss the first point, that is geometry. What is the geometry? Geometry is everybody know that as a mathematical point, that is geometry. It means that shape. It means that shape or akar, you can say that the. And geometry, it means that the crystalline solid have the regular geometry. एक class है, class में 20 students हैं और they are arranged in a regular manner, यानी बहुत properly class में वो arranged होके और बैठे हुए हैं. जो sitting arrangement है वो proper है. तो we can say that the classroom is arranged in a proper manner. That is the crystalline solid. It means that all the constituent particles are arranged in a regular or definite pattern. That's the example of crystalline solid. But और एक ही क्लास ऐसी है जिसके अंदर स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से बैठे हैं, कोई उस कोने में बैठा है, कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर. That is the irregular pattern. So that is the amorphous solid, in which the constituent particles are arranged in an indefinite or irregular geometry. Okay. Now the second point, what is the order? Order, it means that कोई क्लास है, उसमें जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, they are arranged in a regular pattern. वो regular सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर पैटर्न में है, तो हम उसको कह रहे हैं कि दे आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न. और उस ऑर्डर को, यानी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन अ सिट इन अ प्रॉपर मैनर, तो हम कहेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर. और अगर एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, दे आर, वो उनका सिटिंग तो प्रॉपर है, बट कुछ बच्चों का क्या है, सिटिंग प्रॉपर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर. सो we can say that in a crystalline solids, the constituent particles are arranged. Most of the constituent particles are arranged in a long range order. It means that in a long range they have the definite shape or definite regular geometry. Now, but in the amorphous solids, some part in a solid in which the constituent particles are arranged in a regular manner, but most of the area in which the constituent particles are arranged in a irregular
manner. So we can say that the crystalline solids have the long range order, but in the amorphous solids the constituent particles have the short range order. And this short range, ये जो पार्ट है जैसे इसमें क्या है, पार्टिकल्स अरेंज्ड है बिल्कुल रेगुलर मैनर में, तो इस शॉर्ट रेंज को हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलेट्स, क्रिस्टलेट्स. ओके, नाउ द थर्ड इज मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट, the constituent particles are arranged in a regular pattern by which when we give the heat then take the high temperature or can say that the sharp temperature. ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम कैटेगराइज करते हैं इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड. ग्लूकोज को आप चाहे यहाँ पर मेल्ट करो चाहे कहीं और किसी दूसरी जगह पे जाके मेल्ट करो, इन द बोथ कंडीशन दे हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट. अब मेल्टिंग पॉइंट मशीन से जब उसको आप मेजर करोगे तो दोनों का दोनों जगह पे मेल्टिंग पॉइंट, जहां पे व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट, एट अ पॉइंट वेयर द सॉलिड स्टार्ट मेल्ट्स, यानी जहां पे भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. तो मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइंस का क्या होता है, शार्प. बट एमोर्फस सॉलिड्स में जो उनका स्ट्रक्चर होता है, जो शेप, तो जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, इरेगुलर. सो उस कंडीशन में दे हैव द दे डोंट हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट. उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, उस रेंज से ऊपर नीचे आएगा. Okay, now the next point is heat of fusion. Due to the sharp melting point have the definite heat of fusion, but in the amorphous solid they don't have the definite or can say that the indefinite heat of fusion. Now the fifth point, cleavage. Cleavage क्या होता है, when cleavage normal है, biological word हम यूज करते हैं कि या यू कह सकते हैं कि क्लीवेज होमो और हेटेरो दो तरह के होते हैं, इक्वल कट करना और अनइक्वल कट करना. ओके, इट मींस दैट क्लीवेज इज मीनिंग दैट कटिंग, कट करना विद अ नाइफ. व्हेन वी कट अ सॉलिड दैट इज मे बी द क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, व्हेन वी कट द सॉलिड, इफ द क्लियर क्लीवेज और क्लियर कट pattern obtained, then can say that these type of solids are crystalline solids. But those solids have the undergo an irregular cleavage or irregular cut, then we can say that these type of solids are amorphous solids. Now the next point is anisotropy. Anisotropy and the isotropies are two terms. Crystalline solids have the anisotropy in nature, but the amorphous solids are isotropic in nature. So now we will discuss the anisotropic and isotropic. What is the anisotropic or isotropic? Anisotropic is a nature of the solid state in which those solids, their physical properties are different in a different direction. And which physical properties? Electrical conductivity, mechanical strength और refractive index. यानी उन different डायरेक्शन में different होती है. It means जो भी solids होते हैं, जो crystalline solids होते हैं, उसमें क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो उस पूरे सॉलिड में जो इलेक्ट्रिसिटी की रेंज है वो सेम नहीं होगी, सभी डायरेक्शन में अलग अलग रेंज से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. सो if the crystalline solids have the anisotropic nature, it means that the physical properties, that electrical conductivity, mechanical strength and refractive index are different in a different direction. But the amorphous solids show the isotropic in nature. Isotropic, what is the isotropic? Those solids in which their physical properties again, electrical conductivity, mechanical strength and the refractive index are same in all direction. सभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी डायरेक्शन में उनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू सॉलिड्स.
crystalline solids are the true solids, but the amorphous solids are the pseudo solids. Now true solids तो इसलिए कहते हैं हम इन्हें because the crystalline solid in which the constituent particles are arranged in a regular pattern and they have the long range order and have the sharp melting point. Okay, but the amorphous solids are called pseudo solids or can say the super cooled liquids. Pseudo solids और super cooled liquid कहते हैं. Pseudo solid का pseudo का क्या मीनिंग होता है? False. हमें दिखता क्या है बट होता क्या है. ओके, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें फ्लो का नेचर नहीं होता. जो क्रिस्टलाइन टाइप के सॉलिड्स होते हैं दे कांट फ्लो, बट जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं दे कैन फ्लो. इट मींस दैट इनमें फ्लो करने का नेचर होता है. जैसे फॉर एग्जांपल जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, जो पुरानी हवेलियां होती थी, उनमें जो विंडोज लगी हुई होती हैं, जो मिरर, जो कांच की मिरर की विंडो जो होती है, वो हम आज जाके देखेंगे तो हमें कैसी दिखती है? धुंधली धुंधली दिखती है. मिल्कीनेस अपीयर हो गया उसमें. वो किस वजह से हुआ है? बिकॉज जो ग्लास होते हैं, जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है, वो उनमें यूज, वो ग्लास होता है उसमें यूज किया हुआ. तो जब दिन का समय होता है, जब तेज धूप होती है, तेज सनलाइट बहुत ज्यादा हाई होती है, उस कंडीशन में जो हाई टेम्परेचर पे जो ग्लास होता है वो मेल्ट करना स्टार्ट करता है. तो और जैसे ही रात नाइट के टाइम पे क्या हो जाएगा कि ठंड हो जाएगी, तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ दिन में और नाइट में वो क्या हो गया? वापस से कन्वर्टेड इनटू सॉलिड और वो फ्लो करना बंद कर देगा. तो उस कंडीशन में क्या होगा? धीरे धीरे जो आप मिरर है, जो विंडो का मिरर होगा, वो ऊपर से तो क्या हो जाएगा? थिन, और नीचे से क्या हो जाएगा? थिक. और जो मिरर है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्या हो जाएगी? लेस. और हमें जो मिरर है विंडो का वो कैसा दिखेगा? मिल्कीनेस अपीयर हो जाएगी उसमें. ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ. Now the seventh point is clear. Now the next is your homework. Question number one. Question number one is why is glass considered a super cooled liquid? Okay. And the second question is, classify the following as amorphous and crystalline solids. Okay, these are the examples: benzoic acid, Teflon, cellophane, fiberglass, copper, and potassium nitrate. Now these are the two questions in which
first question, that why is glass considered a super cooled liquid? Okay, and the question second, classify the following as amorphous and crystalline solid. आपको इसमें ये जो एग्जांपल्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है कि क्रिस्टलाइन का एग्जांपल कौन सा है एंड द amorphous का एग्जांपल कौन सा है. Okay, now thank you very much.